Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. This is our special session called ULLAS. Yes, you're watching us live on our PMeVIDYA channel number 14 and also on our YouTube handle NCERT Official. Now, why this program and what is the topic for today? Well, I will definitely share a brief introduction with you, but before that, let me tell you that you can also connect with us today and you can ask questions relevant to the topic through various platforms. Well, you can send us a message on our YouTube handle NCERT Official and you can always write an email to us on cncl.ncert@yahoo.com. Now, the topic of discussion today is assessment and certification of learners under ULLAS. Now, before we delve deep into the scenario and I introduce you all to our expert, let me give you a brief introduction of what exactly this program is all about. Now, with a view to make Bharat fully literate, Nav Bharat Saksharta Karikram is being implemented as a centrally sponsored scheme called ULLAS. Understanding of lifelong learning for all in society, that is the full form of ULLAS, and it has been implemented from 22-23 to 2026-27. Well, these are the years. And it aims to provide foundational literacy and numeracy to non-literates aged 15 and above who have missed formal schooling. Now, it is a very important program for such children who have been deprived of regular school education for some reason or the other. It aligns with the National Education Policy 2020 and it has some important components which are critical life skills, basic education, vocational skills, continuing education and foundational literacy and numeracy tops the list. Now, when we talk about who all have appeared and what all has been the outcome, now the figures are really unique and quite interesting. So far, total learners appeared in FLNAT, that is Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test, is 1,10,82,932 from 31 states and union territories. Now, isn't this incredible? And figures are continuously increasing because there's such an important program. And when we talk about making education accessible to all, this is the criteria and that's how we should be doing it. Now, to have a further discussion on the process, why this program is important, what exactly it is and how it is implemented in states and union territories, we have invited our expert in the studio. We are joined by Dr. Kuldeep Kumar, Senior Consultant from Adult Education Bureau, Department of Social Education and Literacy under Ministry of Education. Sir, namaskar and very warm welcome to the session. Namaskar, namaskar. Now, sir, figures look incredible. And I'm sure that you will throw some more light on it. So I would like to ask you that what exactly is assessment and certification in ULLAS, that is Nav Bharat Saksharta Karikram. So please, just elaborate a bit. Thank you. As you know that in formal education system, there is a process of examination. After teaching learning activity, for a school going children or any students, then our examination is required. Same, the teaching learning activities process also for non-literates of our scheme, that is ULLAS Nav Bharat Saksharta Karikram. The criteria of ULLAS learners is 15 years and above, non-literates in the country. So there is a process of teaching learning activity in the country. All states and UTs are organizing classes in literacy center, that is Samajik Chetna Kendra, established in the country. The implementation unit of this scheme is school. That school is registered on ULLAS portal. Okay. So after completion of the teaching learning activities, to assess the skills of non-literates or learners, those have completed the course, the Government of India or the scheme approved the Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test. Right. Generally, it is organized twice in a year, generally in the month of September and March. But the state have flexibility to organize as per their need. Now, this year, we have organized last year 2024-25, that is in September,
and we are going to organize next in 2025, that in the month of March. Okay. However, the state have flexibility like Assam, Madhya Pradesh, and Meghalaya, and many states have requested to organize as per their requirement. So state have flexibility. So in this we will, or the assessment system or certification system check the skill, reading, writing and numeracy, and there are three type of Basic literacy we are checking, the 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, and because we are striving to make Bharat Jan Jan Sakshar, that's the logo. Yes, And sir, if we talk about assessment test, Yes. we know that education is imparted, I guess, both in offline and online mode, right? Generally, this is offline mode. Okay, offline Generally, it's mode. offline mode, and it's conducted in literacy center. Literacy centers are established or being established by the states. Okay. Generally in schools. In schools, okay. And in this process, the states, the district administration and school administration organize successfully our foundation literacy assessment test. Right. Yes. Now, so no teaching learning process is complete without assessment. If we talk about assessment, feedback, evaluation, then who conduct these assessment tests? The assessment test conducted by Government of India, Department of School Education, Literacy, in collaboration with the support of state and UTs in the respective region. But the certification is the mandate of NIUS, National Institute of Open Schooling. And after completion of examination, the state and UTs prepare assessment sheets and submit to Department of School Education Literacy, and Department of School Education Literacy submit to NIUS for certification. And after this, a certificate issued to all learners. Right. Now, so we all know that, education is the basic right of all human beings, and those who are deprived of it, of it for some or the other reason, this particular process is a boon to them. After completing this basic literacy thing, if one wants to pursue higher education, then what are the ways forward? Yes, as per recommendation of National Education Policy 2020, that is equivalency is mentioned in the recommendation of adult education and lifelong learning. Suppose a learner who has or completed this foundation literacy and numeracy, so she or he can appear for equivalency of 3 class, class 3, standard 3. And after 3, 5, 8, 9, 12. So this is a ongoing process. Okay. And equivalency as recommended by national policy, it may be continue after 3, 5, 8 and 9, 10 along. And we're providing this education in different regional languages and mother tongue of the students, because we are focusing on the mother tongue a lot as per National Education Policy 2020. Yes, ma'am, you are right, ma'am. State have flexibility. First language, there is own language. Yes. Suppose in Gujarat, the state, generally state will talk in local language, that is Gujarati. Yes. But arithmetics and reading, this is also is common. Reading means whatever she or he know. Numeracy is the common for all. Numeracy is common for all, yes. And I'm sure that you must be having a lot of questions and some doubts that are common for all. So why don't you reach out to us through our YouTube handle NCERT Official and write an email, as I've already mentioned. All the details are also flashing on your screen, and we are waiting for your questions, and we will definitely respond to you. And now, sir, because there are a lot of students, we have such a big country, a lot of diversity, and this is not a single person's or a single entity's job. States and union territories are playing a very important role here. Yes, yes. So for those who are watching us and probably do not understand English, I would like to translate in Hindi as well. कि ये जो भी हमारा मिशन अभियान है, इसमें हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज, हमने रिजल्ट की भी बात करी है, तो इसमें जब हम बात करते हैं राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज का, तो उनका क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि सारी चीज़ें कोलेट की जाए, कंसोलिडेट की जाए और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जाए? क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दोनों ही को सामूहिक रूप से इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है।
राज्यों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारे लर्निंग सेंटर्स हैं, सामाजिक चेतना केंद्र हैं, या हमारे जो नॉन लिटरेट्स या हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, शिक्षार्थी हैं, वो सभी राज्यों में हैं। तो राज्यों का सबसे पहला कार्य तो ये है कि वो क्लासेस को अटेंड ऑर्गेनाइज कराते हैं। जी। क्लासेस में NCERT CNCL द्वारा वो प्राइमर्स तैयार किए गए हैं, जो सभी स्टेट्स को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और जिनको उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया है, और वो उसी के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। हमारा उल्लास प्राइमर है, जिसको जो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आसान भाषा में है, और उनको भी राज्यों ने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया है और उसका प्रयोग करते हैं। उसको कंप्लीट होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि हम उनकी न्यूमेरेसी, हमारी उनकी रीडिंग राइटिंग को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जी। फिर हम चेक करने के लिए प्रोसेस, जैसे कि हमने अभी बात की कि FLNET यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट, यानी एक मूल्यांकन परीक्षा है। उस मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन राज्यों में किया जाता है। उस राज्यों का मुख्य कार्य, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, सबसे पहले तो वो लर्नर्स को रजिस्टर्ड करेंगे, उनको पंजीकृत करेंगे कि ये हमारे रजिस्टर्ड लर्नर अपना शिक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं, और उसके बाद उनको हम असेसमेंट के लिए जाएंगे। असेसमेंट का एक डेटा तैयार किया जाता है। उस असेसमेंट को डेटा को हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर ब्लॉक वाइज, इवन स्कूल वाइज तैयार किया जाता है। तो स्कूल में सेंटर्स बनाए जाते हैं। स्कूल के सेंटर्स की मॉनिटरिंग वहाँ के ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, ब्लॉक लेवल की मॉनिटरिंग तहसील स्तरीय, और तहसील स्तरीय की डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग होती है। जी। हमारे द्वारा राज्यों में इसका विजिट भी किया जाता है, तो हम देखते हैं। इसका कुछ हम इसी सेशन के दौरान कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ और अन्य चीज़ें भी, गतिविधियां आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल सर। तो उसमें हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक उत्साह जो होता है, उत्साह पूरे उल्लास के साथ पूरा जो हमारी स्कीम है, जो उल्लास है ना, वो उल्लास के साथ उसका होता है। और इसमें न केवल शिक्षार्थी स्वयं आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि शिक्षार्थियों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो क्योंकि इस परीक्षा के बारे में जो समय है, वो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का होता है। यानी ये जरूरी नहीं कि वो 10 बजे ही आना है। अरे वाह, तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में ये 3 घंटे की परीक्षा होती है। तो जैसे क्षेत्र होता है, रीजन होता है, गाँव होते हैं, तो वहाँ पर गृहिणियाँ या महिलाएं घर का काम करके भी आती हैं। कुछ जो पुरुष लर्नर्स होते हैं, तो वो खेत में भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उसको करने के बाद भी वो आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि 10 बजे से 5 बजे के बीच में परीक्षा का आयोजन होता है। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू सर दिस थिंग ओनली कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि इतना अच्छा एक मैं कहूँगी इनिशिएटिव है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आपने बताया कि कितने बड़े मैसिव स्केल पर काम कर रहे हैं। सो जो असेसमेंट देने आ रहे हैं, और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कौन देता है असेसमेंट, हु ऑल कैन पार्टिसिपेट, और क्या उनके मन में एक उम्मीद और आकांक्षा रहती है आने वाले फ्यूचर के लिए? हाँ, ये जो असेसमेंट के बारे में जो आपने बात की है, तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि असेसमेंट किसका होता है। ये हम आपको बता ही चुके कि असेसमेंट का जो सर्टिफिकेशन का कार्य है, वो राज्य और NIOC यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ी सी प्रक्रिया आपसे को बताना चाहते हैं कि असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए हमारे द्वारा, भारत सरकार द्वारा NCERT और NIOS के कोलैबोरेशन से एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट तैयार की जाती है। जी। तो क्वेश्चन आंसर बुकलेट जो तैयार होती है, वो हमारे द्वारा सामान्यतः 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाती है। ओके। हम प्रोटोटाइप उनको भेजते हैं, सैंपल भेजते हैं, और स्टेट को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार, एज पर देयर नीड, द स्टेट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। ओके। However, the format will be same, the question numbers will be same, but I would like to share to some one question answer booklet we have. That is this is a question answer booklet. Okay. All right. We have shared the in Hindi and English. It's like a board exam booklet. Yes, this is a board examination booklet, and this is a version of Assamese language. Okay. So this is the Assamese language. So like you may see, this is.
So name of roll number, name must be there. Center code also. So this is the after evaluation. This you may see this is the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. So this is the how many what was the allocated number और student ने कितना number लिया है वो सब होने के बाद the total number and the signature. So this is the process like this. ये questions हैं. And you said the states have the liberty to make a few changes. Yes, What yes. kind of changes, sir? For example, suppose here we have put the flower. Okay. Flower. This flower is the lotus. They can put the Flower is the we commonly that is the flower lotus. But as per requirement of the state, the one more famous flower, yes, which oh, is the very much indigenous one. indigenous Oh. one, so it can change like this one. This is the pot. Something that is more relatable for them. Yes. Okay. Because it approachable. Yes. True. Approachable. Like we put here the people tree. But in the South India or Northeast region is Bamboo the other tree? one. Bamboo tree. Yeah. So the tree is a very common in the Northeastern region bamboo tree. Yes. So state have flexibility like this. Okay, so bamboo okay, tree got this it. So some this one the common like this. Like picture is the Northern Indian. Wow. This the scenario is the Northern India as per requirement this. The some things are written in Hindi in our. Right. It will be it may be right. Yeah. Yes, ma'am. It may be right in local language. Very like nice. This one. Yeah, right. So this is like numeracy. And it So is this so catchy. It's like fun solving the question paper. Yes. And time is also 3 hours. 3 hours. Yes. 3 hours. All material like stationery, question answer booklet, even tea and snacks also, the biscuits also. Lovely. And if the small kid is with her, so the schools or the Crash state government. facilities also there. Yes. The facility like biscuit, even milk also. That is So lovely. so this type of facility, the state provide as per direction of government of India. This is the when we if you got an opportunity and you visit any center. I would love to, because the way you're explaining things to me, it is making me so curious to know more about the process Yes. and how it happens. And, I want to see those smiling faces Yes. that they are there at the center preparing for the examinations and they have miles to go. Yes, and not only this, after the completion of examination, result declare online mode. That is the entire, even a single person can see result on NIS portal. Lovely. And this result also share with the state, and state also distribute the certificate. We will also share some certificate, whatever issued. And this is the, you can say the, now with the tradition of the state and UTs, they distribute the certificates in a big program, or the call the dignitaries also. Lovely. Like I would like to share the example of just certificate distributed on 26th January. That is the Honorable CM of the Goa Wow. come and distribute the certificate. Like this certificate So is motivating it yes, is. so motivating. Yes. Like last in the month of February, Honorable Shiksha Mantri ji distributed These the are the certificates. certificates, Yes, this yes. is the certificate. Yeah. Yes, Honorable Shiksha Mantri ji and Honorable Making it a Madam. grand event and making it an Yes. achievement not just for the people involved, or the students involved, but for the entire nation. Yes. And that yes. is incredible. Yes, madam. This is the peak of Rajasthan, in which our director and our education minister, principal education secretary, and other dignitaries on the dais and distributing the certificate of the learners. Lovely. So this is like CM, like this is the Honorable CM of Goa, the distributing the certificates of this. वाकई सर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और मतलब मुझे तो लग रहा है कि इस प्रोग्राम के बारे में जितनी अवेयरनेस फैलाई जा सके, असेसमेंट के बारे में जितना ज़्यादा जाना जा सके उतना कम है। सो प्लीज़ आप लोग हमें रीच आउट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है cncl.ncert@yahoo.com और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब हैंडल NCERT ऑफिशियल पर भी अपने कॉमेंट्स हमें भेज सकते हैं। सर, यू हैव शोन अस वन मार्कशीट, आई थिंक यू हैव अनदर दिस थिंग पेपर, क्वेश्चन पेपर विद अस। सो प्लीज़ आप हमें वो भी दिखाएं और थोड़ा डिफरेंस भी बताएं, which language is it, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट से हम साउथ पर आ गए हैं। हाँ, this is the North Eastern earlier I discussed जी। Assami. Now one more example or one more this is the Tamil.
Okay. This is Tamil paper. This is, you may also see the seal. Yes. This is the exam conducted in the month of November. This is the paper of this. Here you can mention it is the November 2024. And so layout and pattern is more or less Yes, the same? more. This same is Okay. you may check it. This is the same. Same. This is the common format which provided by NS or by us to all state, and this is same. This is the question paper like this one. We have prepared same, na? Yes. Now we can compare here. That Yeah. here. Earlier it was this. Now this is bell, ghanti. This is bell. Yes, so Yes, we can yes, keep yes. it at the center. Yes, so that, you know, Yes. everybody can see. Yeah, can compare. Wow. This is bus. Here was something different, na? This. I can Like, see the pictures have changed as per the region. yes, as per the region, like this one. Same, like this one. Wow. So this is the nariyal tree, the Yes. coconut tree. So as per their need, this is the like. Right. This same. This is this same this. And what about the marking scheme, sir? Is it Yes, also the yes. same? Marking scheme is the very simple. Here the question is one. This is 1 to 6. 6 question. The marking is here. So this is QAB, question answer booklet. Okay. Same, the learners fill this one, and evaluation is also same here. Right, So this one like this. This is a fill in And the you blank. get 3 hours everywhere. Like, Yes. sir, also one more thing that in CBSE pattern, we get 15 minutes extra for reading the question paper. Do they also have such facility? I think कभी इसकी जरूरत पड़ती जरूरत ही नहीं पड़ती है. कभी It's जरूरत so पड़ती simple. नहीं है. तो दिस इज वेरी सिंपल कि वो जी. 3 घंटे से पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन क्योंकि उनको पूरा इतना टाइम दिया जाता है कि उनको ये परेशानी ना हो कि समय कम है. तो वो 10 बजे से और 5 बजे के बीच बिटवीन 10 to 5 वो चाहे वो 11 बजे आते हैं या वो 12 बजे आते हैं या 1 बजे आते हैं या वो 10 बजे आ जाते हैं. लेकिन जनरली जो हमने देखा है कि 50 to 75% लर्नर्स अपने टाइम पर आते हैं. टाइम पर आ जाते हैं. क्या बात है. हैं तो और बहुत ही जब भी हम स्टेट में जाते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ भी हम गए हैं, हमने देखा है कि वो एग्जाम को एंजॉय करते हैं. Because that is the motive. You know, like we are discussing here, we should have fun in the conversation. Who are watching us must enjoy, and those who are preparing for the exam or studying, they must enjoy, because that is why I say let's make the learning joyful. Now, sir, we are left with little time, so 2 very important questions I want to ask you. Can anyone who is non-literate participate in the assessment test? Silence for a while. Yes. Okay. Non-literates, can you repeat the question? Yes. Can anyone who is a non-literate participate in this assessment test? Yes, anybody can participate in assessment test, but he or she has to complete the material reading, writing and numeracy. Okay. Whatever in school, or suppose I would like to clarify the example. 2 person, one is literate, one is non-literate. Yes. Staying in a village or staying so far. Suppose I am in Delhi, I am a literate person and one person from Tripura. Right. That is, she is or he is a non-literate. But we have connection. I want to taught them, teach her, or so I can teach her. Whether online or offline. Offline, right. Offline, she is for 6 months he is here, and after this in the month of March, then so she will registered as learner in a particular school in which, as per our portal, the GPRS facility is available. Okay. So when we registered, then nearby, suppose the pin code number 201014. This is Ghaziabad pin code. तो नियर बाई ULLAS में जितने भी स्कूल होंगे वो शो होंगे. तो any learner or non-literate can register. This is the direct registration process. Right. Any non-literate. But generally we are focusing on the school wise. Every school has its list of non-literates. जी. Non-literates की लिस्ट के अनुसार हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद उनको हम पढ़ाते हैं. तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल है जो इस स्कीम में सबसे पहले भारत सरकार ने किया है कि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराते हैं. पहले जो वॉलंटियर्स थे उनसे थोड़ा सा हटकर वॉलंटियरिज्म है. वॉलंटियरिज्म पहले भी था, अभी भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे NCT के जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को
में अपनी कोर्स कर रहे हैं उन सब के लिए ये हमने मैंडेटरी किया है जी। तो कि ये लगभग 8 स्टूडेंट्स को वो पर ईयर वो उनको पढ़ाएंगे और उनको इसमें क्रेडिट दिया जाएगा जी। न केवल एनसीटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से गवर्न होते हैं, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, सभी स्टूडेंट्स को इस प्रकार का उनको क्रेडिट दिया जा रहा है। तो एक मोटिवेशन उनके साथ है और एक हमारे पास एक वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी टीम है, उनके लिए डेडिकेटेड गाइडलाइन भारत सरकार ने तैयार की हैं और यूजीसी ने, एनसीटी ने, एआईसीटी ने इसके लिए सेपरेट डायरेक्शंस भी इशू किए हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा चेंजेस है। और सर इस पे तो हम बहुत सारी बात कर सकते हैं लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास, तो एक बहुत क्विक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है फॉर सर्टिफिकेशन? हम सर्टिफिकेट तो देख चुके हैं, बट व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ नॉन लिटरेट लर्नर? कैसे अचीव किया जाए? वेरी क्विकली सर। देखिए हमारे तीन एग्ज़ाम होते हैं उसमें। पहला एग्ज़ाम जो है वो है रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरेसी। तो क्राइटेरिया ये है कि 150 नंबर्स के तीनों पेपर होते हैं, उन 150 नंबर में से 33% को मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अब 33% में भी क्राइटेरिया में थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, थोड़ा उसको और सॉफ्ट बनाया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में तो वो क्लियर पास है और एक सब्जेक्ट में वो कुछ कम नंबर से पास है तो उसको 5 नंबर तक का ग्रेस दिया जा सकता है। लेकिन इसको और भी सॉफ्ट किया गया है कि वो अगर 2 में थोड़े थोड़े नंबरों से कम रह गया है तो वो 5 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, 3-2, 4-1। ओके, सो वी विल ट्राई, यू नो। इसके अलावा भी एक और सॉफ्ट उसको और ज़्यादा वो तीनों में भी किया जा सकता है। अगर 5 नंबर तीनों में डिवाइड करके अगर किसी के 16 और 15 आते हैं तो उनको तीनों में भी करके अगर उनको 5 नंबर का वो जो ग्रेस मार्क्स है वो उनको दिया जा सकता है, उनको किया जा सकता है। हालांकि 2 तरीके के रिजल्ट हम शो करते हैं। पहले तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, मैं सर्टिफिकेट को एक बार चाहूँगा कि एक बार फिर उनको दिखाएं। 2 कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं जी, जो हाँ, जैसे ये देखिए कि आप इसको देख रहे हैं कि प्राप्तांक जो लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो 50-50-50 दैट इज 150, दैट इज 34 जो उन्होंने अचीव किया है, दैट इज रीडिंग। एंड दूसरा जो है राइटिंग में उन्होंने 28 किया है एंड न्यूमेरेसी में उन्होंने 43 किया है, तो ये 105, तो टोटल 105 मार्क्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। सेम अदर एक और भी हम इस सर्टिफिकेट को आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखाएं। जो ये दूसरा वाला सर्टिफिकेट आप इसको देख रहे हैं, देखिए पढ़ने में उसको 50 में से 7 नंबर लर्नर को मिले हैं। दूसरे में राइटिंग में उसको 18 मिला है और न्यूमेरेसी में उनको 36 मिला है। लेकिन इनको हमने लिखा है नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी इनको एक बार फिर एग्जाम में बैठना होगा। कारण यह है कि अगर हम 7 में 5 भी नंबर जोड़ते हैं तो जो मिनिमम नंबर है दैट इज 17 वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर ये 12 नंबर होते तो वो डेफिनेटली क्लियर होते एंड तो हम इस प्रकार से इनको सर्टिफिकेट को वो करते हैं। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम श्योर दैट यू ऑल कैन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू द सेशन। इतना मन कर रहा और बात करने का, बट हम और सेशन कर सकते हैं इस पे ताकि और डिटेल में चर्चा की जाए, बट फॉर द मोमेंट थैंक यू सो मच। नमस्कार। And now I'm winding up this session over here. It was a wonderful, informative and an eye-opening session, especially for me and I'm sure for you as well. We talked about assessment and certification of learners under ULLAS. With this, I'm wrapping up the session over here. But before I leave, here is an important update for all of you. Well, it's about the All India Children's Educational E-Content Competition. 31st of January 2025 is the last date. You can log on to cietncert.gov.in on our website for additional details, or you can scan the QR code on the screen. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar.